any advice for those wanting to get into your field of work? See, अभी मेरा field of work is a very big field. I am not a part of department of space. मैं last 12 years में education, consultancy, talking to people, motivating TPS. मेरा नाम भी TPS है, teachers, parents, students. So I talk to a lot of youngsters, and what do? I motivate them to become IAS. What is IAS, Muskan? Actually, I don't know. IAS is not Indian Administrative Service. Generally people say IAS means UPSC, Indian Administrative Service. No, I keep saying immediate academic success. अभी आप पढ़ रहा है वो अच्छी तरह से पढ़ो. You become a good student to understand everything, every subject. अभी 10th क्लास तक आपको मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश, डिफरेंट लैंग्वेजेस, सब कुछ सीखो. कैसे सीखना है? वो एग्जाम के लिए, मार्क लेने के लिए नहीं, फुल इंफॉर्मेशन. किधर से भी कुछ भी क्वेश्चन कोई भी पूछे तो भी आंसर दे सकते, ऐसा पढ़ो. देन ये बफे जैसा है, पूरा टेस्ट करके देखना है, अच्छी तरफ टेस्ट करके देखे, ओ मैं मैथमेटिशियन बनना चाहता हूँ, सो यू स्टडी मैथमेटिक्स. मैं मैथमेटिक्स बीएससी किया, एमएससी किया, एमफिल किया, पीएचडी किया. उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आने के बाद मैं क्या काम किया? सैटेलाइट से मैप बनाया. वो कौन सी सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी है. मैं ज्योग्राफी छोड़ने के बाद मे बी आफ्टर 10 years मेरा काम ज्योग्राफी पे आ गया. सो आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, तो मैं क्या करना पड़ा? 7th, 8th, 9th, 10th क्लास का पूरा पढ़ के मेरा काम चालू किया मैंने. सो आई कीप सेइंग एवरी स्टूडेंट हैज टू स्टडी. कौन सी? एवरी सब्जेक्ट व्हाट यू स्टडी फुल. आपको आईएएस करना है. आईएएस करना है तो आप क्या करना पड़ता? ग्रेजुएशन के बाद 1 साल 2 साल प्रिपेयर करे तो यू कैन डू सिविल सर्विस, यूपीएससी एग्जामिनेशन. वो यूपीएससी एग्जामिनेशन पे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं आपको? 7th, 8th, 9th, 10th क्लास का क्वेश्चंस पूछते हैं. एक्चुअली 7th, 8th, 9th क्लास का क्वेश्चन नहीं है. लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल, मैथमेटिकल एबिलिटी, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, ये पूरा वो कहाँ पढ़ा था आपने? 7th, 8th, 9th, 10th क्लास में. सो व्हाट आई कीप सेइंग, दिस इज माय बुक ऑन सिविल सर्विस प्रीलिम्स एंड बुक. मेरा बहुत सारे बुक्स है. सो दिस बुक सिविल सर्विस प्रीलिम्स एंड बुक. सो व्हाट डू आई से इन दिस? आपको आईएएस बनना चाहता हूँ, सिविल सर्विस में जाना है, कोई भी एमएनसी कंपनी पे जाना है, स्टडी 7th, 8th, 9th, 10th क्लास थरो. इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश ग्रामर, न्यूज़पेपर रीडिंग, current affairs, everything you can study. Don't think for a job. Don't think, oh, I am going to work in this job. I don't believe in that. Career guidance actually wasted. Many people waste their time in career guidance. Actually, career is a subsequent development in your job is called career. A student should get first job. Assume that you are getting a job after graduation, 3 years graduation or 4 years or 5 years, depends on whether you are doing a BA, BSc or BTech or MBBS. वो पूरा ग्रेजुएशन नहीं तो लॉ हो तो भी 5 years. आई एम ए लॉ ग्रेजुएट ऑल्सो, आई एम एन MBA. सो ऑल दैट व्हेन यू डू 5 years के बाद आप सोचना है क्या जॉब आप मिलेगा. सो उसके पहले 12th क्लास, उसके पहले 7th क्लास से करियर गाइडेंस. 10 साल के बाद आपका जॉब के बारे में अभी आप सोचे तो यू नो द वर्ल्ड चेंजेस ऑल ओवर आफ्टर 10 years. Any career guidance which you give today is waste because after 10 years I don't think anybody would have thought about 10 years के पहले आज मार्केट में कौन सी नो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है. बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज स्टडी एवरीथिंग थरोली. आप अभी आपके बीच में, आपके सामने में, आपके पीछे बाजू में क्या क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट मिल सकते, पूरा पढ़ लो अच्छी तरह. उसके लिए आपका दिमाग यूज करो,
You are not a very discovery person. Innovative भी नहीं रहना. Improvised learning रहना है. Small change. And that creativity आपको है, टीचर्स में है. आज टीचर्स डे बहुत अच्छी दिन है. Actually the biggest problem is हमारा टीचर्स को ये इंफॉर्मेशन नहीं है. हमारा टीचर्स हैव नॉट सीन द वर्ल्ड अराउंड. हमारा टीचर्स को पब्लिक क्या कर रहा है. अभी डिपार्टमेंट ऑफ स्पीच के बारे में आप पूछा, मैं अभी तक कुछ बोला ना. Actually every department, every teacher should know ऐसा. Then you can guide your children. कहाँ पे जाना है, क्या करना है. You know, मैं अभी जियोग्राफी में मैप का बारे में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि गूगल मैप में वो यूज़ किया है. हिस्ट्री ऐसे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो यूज़ हो गया है. सो एप्लीकेशन ओरिएंटेड पढ़ाई हो, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्लास में कुछ डिस्कशन हो रहा है, मे बी द नेक्स्ट जनरेशन विल बिकम वेरी गुड. So teachers have a great role to play. I don't think the speakers like me have very less to play because nobody listens. Generally what is required is, I wish I am utilized, I am a free person, I am doing social service. I never charge any of my lectures. I keep traveling across the world. Must have given to 1 million students, 1 million teachers, 1 million parents. Teachers, parents, students. What do I tell them? Study everything perfect. ओके, सो व्हाट एक्सपर्टाइज यू यूज, आप कहाँ पे चल रहा है, कौन सी रास्ता पे चल रहा है, दैट यू कैन डिसाइड. बट आज एक माइलस्टोन बना के रख दो, बट रिवाइज इट एवरी स्टेप व्हेन यू गो अप एंड अप. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. Sir, at last, I just want to know, as I'm just in your introduction only, that you are into five-fold holistic development with Eastern philosophy. Yeah. So, what's that five-fold holistic development? See, yoga is very famous आजकल. Yes. And everybody chant one mantra also before that. I must have gone to the best institutes in India, best universities in India, ask the meaning of that mantra which they chant. So you know what do they chant? Yogena chittasya. Chittam means manas. So your emotions have to be cleaned. So yoga is not for physical exercise. वो monkey काम के लिए नहीं है. But most of the people do this and call it as yoga. And the chanting mantra is yogena chittasya. Did they understood what is yogena chittasya? So manas cleaning, mind cleaning, emotion balancing is yoga's job. But I know that Muskan must have thought yoga is physical exercise. Actually yoga is nothing to do with the physical. Yogena chittasya padena vacha. My words have to be very clean. My communication skill has to be good. My intellect has to work. Then only communication becomes clean, right? So, I am doing yoga, not yoga. Yoga is to clean the manas. My communication skill has to improve with my brilliant brain. So, manas, mana, intelligent, buddhi. And then, malam sharirasya. My body needs to be clean. Vaidya kenacha, like a Vaidya. Vaidya is not a doctor. Vaidya is who takes care of your health, not takes care of your illness. You understood the difference? Kya khana hai? What is my daily routine? How much exercise I have to do? Where I have to walk? Whether my environment has to be taken care of, my body. I have to live in a place where everything is clean. The food has to be clean. So all that life, body care has to be talked about. Now today body care is only polish. Maximum advertisement the TV is body care. Everybody want to look whitish. So इसलिए इडली चटनी खाते, नहीं तो अप्पम इष्टू खाते, सब white खाना खाए तो आप white रहता नहीं रहता. Okay. So actually body care is, DrTPS never went to a barber for cutting hair for last 30 years. No disease. अभी weight करे तो मैं yesterday evening I was taking my weight, it is 61. Always I am between 59 to 61 for last 30-35 years.
no less, no more. No doctor's visit except for teaching them. So my body is perfect, manas is perfect, intellect is sharp, my social skill, communication skill means social skill, and I'm a spiritual man. I'm no religion. I never go to see. Yesterday मेरा घर से 10 मीटर दूर है गणपति का फेस्टिवल चल रहे थे. I don't go to such rubbish useless things. I'm a spiritual man. All these religious festivals are bogus and useless. Okay, so understand this development. People don't develop. They keep doing what the parents were doing. Why the parents did? Because their parents did. Why did their parents do Ganesha festival? Do you know the story of Ganesha festival? Now this is during the Ganesha festival, everybody should know. The Ganesha festival was when Britishers were catching all the people who were fighting against British. We wanted to hide inside the temple for discussion, political discussions. And therefore, they gathered people in the name of Ganesha festival, so that Britishers cannot enter in the temple, so actually Ganesha had a great role in the Indian freedom movement, and that was Ganesha festival. Okay, and that festival has become a religious festival now. Actually, is it not stupid? It is not stupid. Understood? So we take religious festivals without having any reasons. Every religious festival was something to do with the food, something to do with the harvest, something to do with the climate, something to do with the healthcare, something to do with the socializing, something to do with your brain sharpening. Right? So all these physical, emotional, intellectual, social, spiritual, everything together is what every student, every youngster, every person who has got little buddhi, intellect है तो ये पूरा एक समान देख के आप काम करना है. वो that development is what I am doing. So हमारे घर, मेरा बहुत पुराना एक घर है केरला पे, 200-year-old घर है, एक स्मॉल विलेज पे, नानम. वो घर का नाम नानम मतलब नॉलेज. एक्चुअली नानम जानकी नारायण मेंट्री. मेरा मामा का नाम जानकी नारायण, पापा जानकी नारायण मेंट्री. वो घर पे बहुत सारे लोग आके बैठ के 10 दिन का कैंप एंजॉय करते. वो कैंप में क्या सिखाते? फिजिकल डेवलपमेंट, फूड हैबिट्स, विलेज पे कैसे खाना खाते, सोशलाइजिंग. आप विलेज पे घूम के किधर से भी, कौन सी भी घर पे जाओ, उधर से खाना खा के आ जाओ. राइट? वो कहाँ से आ रहा है? दुबई से, गल्फ से, मे बी यूरोप से, अमेरिका से बच्चे लोग आते. वो बच्चे लोगों के कोई भी घर पे जाओ, आप उसके पहचानो, बात करो, उसके फ्रेंडशिप बना दो, उसको खाना खा के लेके आओ, उसको बोलो मैं डॉक्टर टीपीएस का घर पे आया है, मैं इधर का मेहमान हूँ, आपका विलेज पे आया है. ऐसा सोशलाइजिंग. राइट? सो फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल. उधर गान आप डॉक्टर टीपीएस नानम JNAANAM कैंप्स बोल के देखे तो यू विल सी एवरीथिंग देयर, ड्रामा, म्यूजिक, everything. So I do fivefold development. Education is to fivefold development. You can study anything. I am a mathematician. I am a very good teacher in social science. You can see social science Dr. TPS, geography Dr. TPS, history Dr. TPS, English Dr. TPS, Hindi Dr. TPS. You can see most of the subject I teach. Microbiology, nanotechnology, electrical engineering, electronics, mechanical, civil, computer science. Most of the topics I teach. Okay, because I am a cook. मैं एक कुक है तो I cannot say मैं सिर्फ चपाती और बुर्जी बनाता हूँ and don't call me a cook. A teacher should be a teacher who can teach most of this. I am not telling that I can teach up to PhD level. Maybe mathematics up to PhD level, remote sensing, computer science, image processing. मैं काम किया वो subject पे I can teach up to PhD. But मेरा basic level up to degree, many students come.
I am a biotechnology student, bioinformatics DrTPS. देखो आप, you will see some videos on bioinformatics. So, Yeah. I believe that physical, I have to be a strong man. I should show that I am strong. Okay, and I will show you that I am strong wherever I keep traveling across northeast ते जाते घूमते रहता है. I keep doing many physical activities where we have got trekking, climbing the trees, everything we do. In the camp, we teach most of the activities around. Emotional, intellectual. I am a psychotherapist, so I speak about the emotions, intellect, learning abilities, socializing. Many activities are done, and spiritual. I am Eastern philosophy. I am an Indian. Decent. Eastern is entirely different from Western. Understand Bharatiyam. Bharatiyam later has become Hindu. That is not our mistake. I still believe Sanatana Dharma, the Bharatiya tradition, the Indian knowledge was a very strong knowledge. In which मैं आपसे बात कर रहे थे ना, मुस्कान से कल परसों कुछ ये इंट्रोडक्शन के लिए बात करने के टाइम पे बोल रहा है मध्य प्रदेश खजुराहो, हमारा नॉलेज उतना ज़्यादा था, ज्योग्राफी, our mathematics, our chemistry, our biology, our medicine system, आयुर्वेदा का मेडिसिन पूरा आपका पूरा डिजीज के लिए आयुर्वेदा का मेडिसिन से अभी क्या मॉडर्न मेडिसिन कर सकते हैं वो पूरा इंक्लूडिंग आई ड्रॉप्स टू क्योर. आज मैं आपको एक श्लोक भेजा होगा, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. ओ टीचर आई सैल्यूट यू. वो टीचर का क्या काम क्या है? अज्ञान तिमिरंधस्य. तिमिरम इज कैटरैक्ट. अज्ञानम इज नॉट हैविंग नॉलेज. आपको मालूम है? वो मालूम है पक्का? ओ नहीं. एवरीथिंग वी नो बट वी डोंट नो पक्का. करेक्ट. ओ दैट इज कॉल्ड कैटरैक्ट. मैं देख सकते बट क्लियर नहीं है. सो नॉट हैविंग नॉलेज इज लाइक कैटरैक्ट. उसको एक काजल देके, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजनम. अंजनम मीन्स काजल. कोई काजल देना है, वो काजल के हिसाब से आप देखे तो एक बार क्लोज करके देखो, पूरा अच्छी तरह देख सकते. वो काजल कौन देता? डॉक्टर्स. वो डॉक्टर है टीचर. वो नॉलेज काजल देना है सबको. वो आंखों से देखे तो सब क्लियर होना है. इफ ए टीचर कैन टीच लाइक दैट, they are good teachers. They are called gurus. Correct. So I believe I want to make teachers in this country. Call anybody can call me anywhere. Give me food and accommodation. I can even spend money to come there and stay with you and make good teachers. May last week I was talking to someone, even tuition teachers को knowledge देके उसको बनाओ ना, क्योंकि क्लास में पढ़ाई नहीं हो रहा है, सब लोग ट्यूशन के पीछे चल रहा है. सो एटलीस्ट ट्यूशन टीचर्स कैन बिकम बेटर टीचर्स टुमारो. करेक्ट. सो आई एम ए क्रिएटिव टीचर. टुमारो डे आफ्टर टुमारो आई हैव ए क्लास. वो कौन सी क्लास है? डिजाइन थिंकिंग का क्लास है. वो डिजाइन थिंकिंग के लिए मैं क्या पढ़ाऊं, क्या बोलूं. आई केप्ट ए बिग बैग विथ लॉट ऑफ आइटम्स. घर में कुछ बहुत सारे आइटम्स लेके आए. ये डब्बा भी डिजाइन थिंकिंग पे है, ये इसलिए मैं रखा है. बिकॉज दिस डब्बा कैनॉट बी ओपन एज इट इज. यू कैनॉट ओपन. ओनली थिंग यू हैव टू प्रेस इट एंड ओपन, देन ओनली इट कैन ओपन. वाओ. वो लॉकिंग सिस्टम है इसमें. सी ये मेडिसिन इसमें देता, सो नो चिल्ड्रन कैन ओपन इट. इफ यू डोंट नो द ट्रिक, ऐसा एक बार प्रेस करके टर्न करो, खुलता. इज इट नॉट डिजाइन थिंकिंग? सो ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाना है, वही कर रहा हूँ. आई डू लॉट ऑफ क्रिएटिव टीचिंग, क्रिएटिव नॉलेज, वही देता मैं लाइफ में. As same sir, I am also giving that practical based learning or activity based learning to my kids also. So definitely आपसे सीखने के लिए मुझे बहुत कुछ मिलेगा, because as आपने ये एग्जाम्पल दिया, so कितनी सारी चीजें होंगी कि मैं आपसे पूछकर वो अपनी क्लासेस में
बच्चों को करवा सकती है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप क्या करना है, आसपास पूरा देख के तो आपको मालूम होता है। ये हैव यू सीन दिस ब्यूटीफुल कवर फॉर द मोबाइल, राइट? Yes. ये यूनिक है, आपको किधर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बनाया है कवर। एक्चुअली ये डिजाइन ये एक खराब हो गया था, तो इसलिए मैं क्या किया, इधर एक प्लास्टर पेस्ट किया। वो प्लास्टर पेस्ट करने में एक तरीका है, ऐसा प्लास्टर ठीक से पेस्ट करे तो मे बी ओनली ये पोर्शन थोड़ा खराब हो गया, इधर प्लास्टर पेस्ट करे तो डिजाइन नहीं दिखता। अभी अच्छा डिजाइन दिख रहा है आपको, हाँ, right. करेक्ट? वो डिजाइन बनाने के लिए आपको सोच होना है। दैट इज व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग। क्रिएटिविटी इज डिजाइन थिंकिंग। गॉट इट? Yes. So I हर also want to join that classes. हर एक जगह पे, हर एक एक्टिविटी पे यू कैन कीप लुकिंग एट अराउंड एंड देन सी व्हाट कैन बी डन। अभी आप में बात कर रहा हूं, एक्चुअली इधर एक रिकॉर्ड रखा है मैंने, एंड आई हैव गॉट वन कैमरा देयर, अनदर कैमरा देयर, इंक्लूडिंग लाइटिंग कंडीशन इधर रखा मैंने। ओके, सो इट्स लाइक ए स्टूडियो। उसको मैं कितना खर्च किया, कुछ भी नहीं खर्च किया। मेरा घर पे क्या क्या आइटम्स है पूरा मिलके, पूरा लगा के मैं बनाया। Got it? So you have to make your own creative activities. Look at every small thing, what is to be done to make it much more impressive, much more robust कैसे बनाएंगे मैं। Okay? Yes. और that's called design thinking. डे आफ्टर टुमारो टीचर्स के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज इन तमिलनाडु एक पेपर इंट्रोड्यूस किया है, डिजाइन थिंकिंग, फर्स्ट डे। सो ऑल द टीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, सब इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर्स को पूरा मिलके आई एम टीचिंग डिजाइन थिंकिंग। देन दे हैव टू टेक द क्लास इन द नॉर्मल क्लासरूम्स। सो आई टीच टीचर्स इन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑन डिजाइन थिंकिंग। सो दिस इज क्रिएटिविटी। एक लाइव सेशन भी प्लीज लीजिए ताकि हम लोग भी सीख सकें। या डेफिनेटली, दैट इज व्हाट आई कीप सेइंग। आप एक मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, यू टेल मी द सिलेबस, आई विल टेल यू हाउ टू मेक दैट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्रिएटिव। Definitely. सम स्टूडेंट्स, मैं लास्ट कलकत्ता पे था, वर यू आर सपोज टू कम फॉर द आईपा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आईपा ग्रेट, बट आईपा का कुछ डांस वगैरह वगैरह चल रहे थे। इन द कॉरिडोर आई वॉज टॉकिंग टू सम स्टूडेंट्स, वो यूनिफॉर्म पे था इसलिए आई फाउंड दैट दे आर स्टूडेंट्स। दे गॉट अवार्ड फॉर द बेस्ट मार्क्स फ्रॉम मी, सो आई गेव सर्टिफिकेट। आई वॉज गेस्ट देयर, सो आई गेव सर्टिफिकेट, सो आई स्पोक टू दम आफ्टर दैट। आई फाउंड द चिल्ड्रन आर गुड, देन आई सेड टुमारो मॉर्निंग मुझे 8 o'clock to 10 o'clock 10:30 तक मैं फ्री है, आई एम कमिंग टू योर स्कूल, call your principal, call your manager, and then tell them we will go to your school. I went there. Then they asked me, trigonometry is very tough. I said, bring your children, schedule a GMIT. So next class is trigonometry for you. So I taught trigonometry. Last month, 3 weeks back, I taught trigonometry to them. Entirely different style. I am sure all the children will love trigonometry now than any other subject. Now I tell them, you get me biology subject and then I'll tell you how to love biology. So I keep saying every teacher has to be a marketing person for their subjects. They have to market the subject. That is what is to be done. Yes, sir. Thank you so much, DrTPS Kumar sir, for giving your precious time and giving your valuable, what I can say, valuable tip and telling us about the holistic development. And definitely, I would like to join your upcoming sessions on design thinking. I will tell you, Muskan, you must have told many guests, thank you for giving valuable time. वो भी thank you बोल के गया होगा. But actually it is not correct. मेरा टाइम ये डिस्कशन से वैल्यूबल हो गया है, बिकॉज यू एडेड वैल्यू टू माई टाइम. सही है नहीं?
Right, sir. Suppose you did not hunt me through the last program, some contact somewhere, and then send me a message, contacted me, but your contact is also not correct way. You just messaged me without an introduction, without a proper message. Actually, I need not reply, but I have a bad habit. Every day I get more than 1,000 messages. I send reply to all of them. If somebody even sent me a miss call, I will call them back. Finish that call that day. क्योंकि कल भी मुझे इतना तक वो that many number of calls I am expecting. So कल का pending हो गया तो problem है. So what do I do? When you tell me, oh, I need a time to discuss, मैं नहीं बोलेगा. Maybe after 2 days, no. I said immediate. When is your time? आपने क्या पूछा था? मुस्कान पूछा डॉक्टर टीपीएस का टाइम क्या है? नो, आई सेड यू टेल योर टाइम, आई कैन एडजस्ट, आई विल बी रेडी, बिकॉज आई मे बी रीडिंग, आई मे डूइंग समथिंग, आई मे डू सम writing, I may be editing this video, all that is what I am doing. All my videos I edit myself. So I spend a lot of time. That time, anytime I can do. But this questions which comes from you, which are practical, which are from common teachers in this country, very rarely you see teachers like you, I will tell you, Muskan. Very rarely. I am so happy. If I look at my Facebook, there are more, maybe 300 requests from Pakistan. Youth people wanted to talk to me. You will see Pakistan Dr. TPS. There are many people who interviewed me. But I am not seeing that many number of people from India. And last time मैंने पाकिस्तान से एक आदमी मुझे इंटरव्यू किया था. He is a tailor with one single door shop. वो टीचर भी नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं है. A single shutter shop में टाइलरिंग करने वाला को भी he wanted to talk to a space scientist in India to learn something new, communication skill, personality development. So India, we have been taken for granted. Very, very difficult to get somebody like you who will add value to my life. I'm so happy, right? I'm so happy that this discussion, if is listened to by somebody else and then get into contact with me back, referring your name, saying that I heard Muskan's discussion, I'll be the most happiest person. Don't look at how many number of people will hit it. There are a lot of people who come for interview, and you know what do they do? ए आपका इंटरव्यू में 100 से ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है, बट मेरा दूसरा इंटरव्यू में 1000 से ज़्यादा है. मैं वो भी बात, ऐसा बात भी कर सकता हूँ. आई एम ए गुड एस्ट्रोलॉजर. ओके, मैं हॉरोस्कोप के बारे में एक डिस्कशन हो गया तो आई एम श्योर इट विल गो बाय लैक्स. बट दैट इज नॉट माई एम. माई एम इज टू गिव क्वालिटी मैसेज. सो क्वालिटी ऐड करना, मेरा लाइफ is becoming higher and better with the people like you. So it's my gesture to thank you and pranams. Sir, I have seen you so active. I have listened to most of your videos, right? So I am so glad that you have taken this initiative, and then happy. I am so happy. Thank you. Thank you so much, sir. I've learned so many things from you. Right. Thank you very much. Thank you, sir.